Godke sir already talked you about the anatomical approach on thyroid gland. Then we have discussed about uh, thyroid gland and its hormones, that is T3 and T4. We have discussed in last lecture thyroid gland having follicular cavity, follicular cells, and in between two follicular cells, parafollicular cells were present. Parafollicular cells secreting calcitonin, whereas we have discussed the follicular cell having thyroglobulin as well as the synthesized T3 and T4. In last lecture we have discussed for synthesis of thyroid hormones, what we need is tyrosine, Thyroglobulin. iodine. This tyrosine and iodine we get from diet. Through diet, we get that get absorbed by GIT, and through blood, it is coming into the follicular cells. Once it is coming into the follicular cell, they get combined to form MIT and DIT. Yes or no? Yes, sir. Okay. Then we have discussed in last lecture, one MIT, one DIT will give rise to T3, whereas 2 DIT will give rise to T4. T4 is also known as an thyroxine. This is all we have studied in last lecture. Now we have to study about functions of thyroid hormones. There are two main functions of thyroid hormones. First is to increase basal metabolic rate, and second is to stimulate growth. Action on basal metabolic rate. What thyroxine is doing, thyroxine increases metabolic activities in almost all the body tissue. So it increases basal metabolic rate by increasing oxygen consumption of the tissues. Action on protein metabolism. Thyroid hormone increases the synthesis of protein in cells by increasing translation of RNA, due to which ribosomes get activated and more protein is get synthesized. तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है. हाउ इट इज इंक्रीजिंग? बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, ड्यू टू व्हिच ribosomes get activated and more protein get synthesized. Thyroid hormone also increases transcription process of DNA to RNA, so that in turn this process is also increasing the synthesis of protein. Thyroxine acts on mitochondrial activity of cell. It increasing the synthesis of RNA as well as it increasing the production of ATP. And this ATP which is formed by this process is utilized for the energy of cellular activities. Next function is action on carbohydrate metabolism. Thyroxine stimulates almost all the process involved in the metabolism. Thyroxine increases absorption of glucose from GI tract. It increases the glucose uptake by the cell. Not only glucose uptake of the cell, whatever diet we are taking, glucose is coming, that glucose is get absorbed from the GI tract. That taking up of that glucose by the cell is initiated, promoted by thyroxine, as well as what it is doing, it is increasing the breakdown of glycogen to glucose. Glycogen is a stored amount of glucose. That glycogen get break down into the glucose. This breaking down of glycogen into glucose whenever there is a requirement by the body is done by the thyroxine. Then on fat metabolism. Thyroxine decreases fat storage by mobilizing the fat depots. What the thyroxine is doing, whatever fats are get stored, that will get utilized for the different purpose. So this has been done by the thyroxine, so that
जहां कहीं फैट्स के डिपॉट्स है वहां से फैट निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन. So thyroxine decreases fat storage and utilizes more fats. Then action on plasma and liver fats. You know, while teaching in the class also I told you that thyroxine, thyroid hormones के functions जो है, it is from almost head to toe. तो सब जगह thyroid hormones essential है. Action on plasma and liver fats. Even though there is an increase in blood level of free fatty acid, thyroxine specifically decreases cholesterol. Then phospholipids, triglyceride, all these levels in the plasma get decreases because of the thyroxine. Not only that, thyroxine increases formation of many enzymes. Since vitamins form the essential part of the enzyme, so you can say thyroxine acts on vitamin metabolism also. Thyroxine increases formation of many enzymes, and since vitamins form essential part of enzymes, so you can say vitamins, the thyroxine plays role on vitamin metabolism also. Thyroid hormone increases heat production in the body. How it is increases heat production in the body? By accelerating the cellular metabolic processes and by increasing the BMR. So whenever metabolic activities get increases, BMR get increases, and when BMR get increases, more heat will produce in the body. This is how thyroid hormone or thyroxine increases heat production in the body. It accelerates the growth of the body. It accelerates the growth of the body as well as it causes early closing of epiphyses, so that height of the individual may be slightly, because of this. That we'll study later on what is hypothyroidism and hyperthyroidism, but you should know as it accelerates the growth of the body and it causes early closing of epiphyses, so that height of the individual may be slightly less in the hypothyroidism person or hypothyroidism patient. So basically you should know thyroid hormones जो है, it is for basal metabolic rate. It is increasing the metabolic activity. It acts on fat metabolism, it acts on protein metabolism, it acts on carbohydrate metabolism. How it acts on carbohydrate metabolism? They will help in glucose uptake by the cell. Yes or no? They will help in the glucose uptake of the cell. How they will act on the fat metabolism? Whatever fat depots are there, उस डिपॉट से फैट को बाहर निकालना और फैट को यूटिलाइज करना. that is the role of thyroxine. जहां कहीं फैट स्टोर्ड है एडिपोज टिश्यू में, मसल्स में, जहां कहीं वहां से फैट्स को बाहर निकालना और यूटिलाइज करना ताकि फैट्स डिपॉजिट ना हो. And deposition of fats is not good. So one way thyroxine is doing the good work कि फैट्स के जहां कहीं डिपॉट से उसको बाहर निकालने का वो काम करता है. प्रोटीन का मैंने आपको बताया with the help of translation and transcription process it help into the protein synthesis. So for protein synthesis, thyroxine is helping. For fat metabolism it is essential, and for carbohydrate metabolism it is essential. I hope you are getting my point. Okay. Yes, Thyroxine is more important to promote the growth and development of brain during fetal life and for the first few years of postnatal life. So this is so much important in the initial days of the fetal life as well as in the postnatal life. For the few years it promotes the growth and development of brain. Thyroxine promotes growth and development of brain. That's why deficiency of thyroid hormones during this period, maybe in the fetal life or maybe into the postnatal life, that may lead to mental retardation. So basically mental retardation का reason शायद thyroid hormones का deficiency हो सकता है, maybe in the fetal life or maybe as you know in the beginning of the life. It promotes the growth and development of brain. तो brain के development के लिए thyroxine जरूरी है और वो अगर सही ढंग से नहीं मिलता है तो there may be the mental retardation. fetal life में भी अगर नहीं मिलता है तो baby may born with the mental retardation. And basically it acts on all the metabolism, protein, fats and carbohydrate. That much it is essential. That's why that may be the problem. Increase in thyroxine secretion
decreases body weight. You know, increase in thyroxine secretion decreases body weight. How? Why and how? Because they Shital? utilize fat. Because it initiates the fat mobilization. Because it initiates the fat mobilization. और अगर fat mobilization नहीं होगा, fat mobilization नहीं होगा, तो body weight बढ़ेगा. और fat mobilization अगर होगा, तो body weight कम होगा. Yes or no? Yes, sir. That's why thyroxine is to maintain the body weight also. Thyroxine जो है body weight maintenance के लिए भी जरूरी है. Thyroxine accelerates the erythropoietic activity. आपने already erythropoiesis पढ़ा है, उसके अंदर आपको बताया गया है कि what are the factors affecting erythropoiesis. So one of the factor is thyroxine. Thyroxine accelerates the erythropoietic activity. Thyroxine increases the overall activity of CVS. It acts on heart. It increases heart rate. It increases force of contraction of heart. Thyroxine causes vasodilatation by increasing the metabolic activities. So thyroxine causes vasodilatation by increasing metabolic activities. Because of increase in rate and force of contraction of heart, it also increases blood volume. When blood volume get increases, cardiac output get increased. When cardiac output get increased, blood pressure get increased. So in short, आपको समझ में आना चाहिए कि cardiovascular system पे भी thyroxine काम करता है. It is increasing the cardiac activity. It increasing rate and force of contraction of heart. और जब rate and force of contraction of heart बढ़ता है, तो उतना ज़्यादा amount of blood will pump out of the heart. That is what we call as a cardiac output. तो cardiac output भी बढ़ेगा, blood volume भी बढ़ेगा, तो blood pressure बढ़ेगा. This is how thyroxine increases blood pressure also. Or you can say it acts on the cardiovascular system in short. Thyroxine increases force and rate of respiration. How it increases force and rate of respiration? It is acting on the respiratory center. It is stimulating respiratory center and increasing the force and the rate of respiration. That you already studied in the respiration chapter. It increases secretion and movements of GI tract. Thyroxine is essential for normal activity of skeletal muscles. Skeletal muscles के normal activity के लिए thyroxine जरूरी होता है. Not only that, thyroid level maintain the normal pattern of sleep. See, as I told you कि बहुत सारे functions है thyroxine के, जैसे metabolism पे है, जैसे growth पे है. In that way, thyroxine is also essential for normal activity of skeletal muscle. Thyroid level maintain normal pattern of sleep. Thyroid level जो है, वो normal pattern of sleep को भी maintain करता है. It is essential for normal functions of normal sexual functions also maintained by the thyroid hormones. These are all the functions of thyroid hormone. If you have any doubt, you can raise your hand. You can ask the questions. These are all functions of thyroid hormones. Everyone is getting. You should respond. Yes. Unless until you respond, I will not get whether I am going in right way or not. Okay. Yes. So this is how thyroid hormones are essential for basal metabolic rate, all the metabolic activities. It is essential for protein metabolism, for fat metabolism, for carbohydrate metabolism, for growth, for skeletal muscle growth. It is important for the development of brain. It is important for fat mobilization. It is important for maintenance of weight. It is important for normal activity of skeletal muscle. It is important for normal pattern of sleep, to maintain the normal pattern of sleep, and it is essential for normal sexual functions. Now, how this thyroid hormone act? You know, there may be long question, as I told you, for 20 marks. जिसमें आपको पूछा जाता है, what is thyroid gland? What are the hormones of thyroid gland? Synthesis of thyroid gland, action of thyroid hormones, and functions of thyroid hormones. So now briefly we will study about the mode of action of thyroid hormones. Now, जैसे ही T3, T4 सिंथेसाइज होता है, वी हैव डिस्कस कि वो थायराइड ग्लैंड के थायरोग्लोबुलिन्स के साथ स्टोर हो जाता है. इट गेट्स स्टोर्ड अलोंग विद थायरोग्लोबुलिन एंड
this follicular cells will develop the pseudopods और vesicles जो है वो open होती है और vesicles के अंदर के thyroglobulin के अंदर जो T3 T4 है वो blood के अंदर liberate होता है. That we have studied in the last lecture. In the target cell, that is liver, muscle and kidney, most of the T4 is deiodinated to form T3, so that true intracellular hormone is T3 rather than T4. तो T4 का conversion deiodination होके T3 में होता है. Thyroid hormones once get released, they enter into the nucleus of cell. वो सेल के न्यूक्लियस में जाते हैं एंड बाइंड विद थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स. सो सेल के अंदर जाते हैं वो एंड न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं सेल के एंड देयर thyroid hormones it enter into the nucleus of the cell and they bind with the thyroid hormone receptors which attach to the DNA genetic strand. तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं सेल के अंदर, उसके साथ जाके बाइंड होते हैं. थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स बाउंड विद अनदर रिसेप्टर्स कॉल्ड एज रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर. इस तरह से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तैयार होता है and this complex will initiate the transcription process by activating enzymes such as RNA polymerase and phosphoprotein kinase. It also stimulates the synthesis of nuclear protein. Thus, large number of mRNA is formed, which activates ribosome to produce more protein. And new proteins also get involved in many activities. This is summary diagram how the thyroid hormones get enter into the cell. In short, आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि थायराइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, थायरोग्लोबुलिन के अंदर रहते हैं, फिर वेसिकल से लिबरेट होकर ब्लड के अंदर आते हैं. ब्लड के अंदर आने के बाद में वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाते हैं. न्यूक्लियस में आने के बाद में वहां के रिसेप्टर से वो कंबाइन होते हैं. रिसेप्टर से कंबाइन होने के बाद में दे विल गेट बाइंड विद द mRNA एंड मोर प्रोटीन विल गेट सिंथेसाइज और इस तरह से वो वहां जाके अपना काम शुरू कर देते हैं. इस तरह से थायराइड हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ thyroid binding receptors. Is it clear to you? And for that you should know this summary diagram. Now, जो भी thyroid hormones liberate होते हैं T3 T4 that has to have some check. तो वो एक regulating mechanism है which get controlled by hypothalamus. Hypothalamus regulates thyroid secretion. हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो थायराइड सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स थायराइड सिक्रेशन बाय कंट्रोलिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन थ्रू थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन दैट इज TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन लिबरेट करता है which is controlling thyroid stimulating hormone and thyroid stimulating hormone controlling T3 and T4. Okay, so hypothalamus secreting TRH which is controlling TSH and this TSH is controlling thyroid gland. In short, that is controlling T3 and T4. Okay, is it clear to you? TRH transported through hypophyseal portal vessels to anterior pituitary which in turn causes release of TSH. तो TRH जो है वो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाता है and that is stimulating the TSH from the anterior pituitary gland and TSH is controlling the thyroid gland and which control the T3 and T4. So hypothalamus, anterior pituitary gland and thyroid gland. This is how the controlling mechanism. हाइपोथैलेमस TRH लिबरेट करता है. TRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो TSH सीक्रेट होता है उसको कंट्रोल करता है एंड TSH जो है वो T3 T4 को कंट्रोल करता है. दिस इज हाउ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज गेट regulated. Now you should know some applied importance. I hope till this you have understood T3 T4 कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे लिबरेट होता है, T3 T4 के फंक्शंस क्या है, देन किस तरह से हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी
In short, TRH, TSH is controlling the T3 and T4. Now, you should know some applied importance. What is hyperthyroidism? Increased secretion of thyroid hormone is called hyperthyroidism. Increased secretion of thyroid hormones is called hyperthyroidism. There are two causes of hyperthyroidism, that is Graves' disease and thyroid adenoma. What is Graves' disease? So Graves' disease is nothing but hyperthyroidism. Because of Graves' disease, there is hyperthyroidism. You are getting my point? Yes or no? Yes, sir. Okay. So because of Graves' disease, there is hyperthyroidism. So what is Graves' disease? Graves' disease is autoimmune disease. What is autoimmune disease? Autoimmune disease ये ऐसे disease है जब खुद के ही immune system जो है वो corrupt हो जाती है और खुद के ही antibodies, antigens के against antibodies बनाते हैं और antigens को kill कर देते हैं, अपनी immune system को खत्म कर देते हैं. This is what we call as autoimmune disease. So Graves' disease जो है वो autoimmune disease है and Graves' disease is the most common cause of hyperthyroidism. यहाँ क्या होता है? B lymphocytes produce autoimmune bodies. Antibodies तैयार करते हैं B lymphocytes and these antibodies act like a TSH. मतलब जो काम TSH को करना चाहिए, TSH क्या करता है? भाग्यश्री, TSH क्या करता है? Stimulate. TSH जो है वो T3, T4 के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. ओके, सो TSH जो है वो T3, T4 के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. तो यहाँ क्या होता है? अब TSH ने काम करना चाहिए एक्चुअली, बट इन केस ऑफ ग्रेव्स डिसीज बॉडी खुद के एंटीबॉडीज तैयार करती है अगेंस्ट दिस व्हाट यू से द TSH, और ये इंस्टेड ऑफ TSH वो एंटीबॉडीज काम करते हैं. मतलब TSH का पूरा कंट्रोल जो है वो जो एंटीबॉडीज है वो पूरा ले लेते हैं और वो T3, T4 को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस. मतलब जो मेरा काम है कोई और कर रहा है तो वो और मुझे कंट्रोल करेगा. तो इस तरह से क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज जो है वो TSH को कंट्रोल करती है और TSH का काम करना शुरू कर देती है. सो दैट वाज अबाउट द ग्रेव्स डिसीज. वो ग्रेव्स डिसीज में वो होता है. Thyroid adenoma is what? Is localized tumor in the thyroid tissue. It secretes large amount of thyroid hormones. So increased thyroid hormone is called as hyperthyroidism. It is because of Graves' disease and thyroid adenoma. Graves' disease ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसके अंदर बॉडी खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट, एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और जो काम TSH को करना चाहिए वो एंटीबॉडीज करते हैं. और थायराइड एडिनोमा जो है वो इट इज अ ट्यूमर, लोकलाइज्ड ट्यूमर इन द थायराइड टिश्यू व्हिच promote the thyroid gland to secrete more thyroid hormone. और जब ज्यादा thyroid hormone secrete होते हैं, that condition is called as hyperthyroidism. Increased thyroid hormone is called as the hyperthyroidism. Now, what are the symptoms of hyperthyroidism? Appetite change, difficulty in sleeping, fatigue, frequent bowel movement, heart palpitation, heat intolerance, increased sweating, irritability, light menstrual periods, mental disturbances, muscle weakness, nervousness, problems with fertility, shortness of breathing, tremors and shakiness, weight loss, dizziness, thinning of hair, increase in blood sugar, toxic goiter, exophthalmos, tachycardia, atrial fibrillation, systolic hypertension, cardiac failure. These are all the symptoms of hyperthyroidism. हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि फैट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है. इसकी वजह से फैट जो है वो थायरोक्सिन क्या करता है? फैट के डिपॉट्स को बाहर निकालता है, फैट डिपॉट्स में से बाहर निकालता है, यूटिलाइज करवाता है. अब थायरोक्सिन अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि ये यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सॉरी ये यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा. थायरोक्सिन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो यूटिलाइजेशन फैट्स का ज्यादा होगा और जब ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा तो फैट जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा तो वेट लॉस होगा. ओके, फिर ग्लूकोज पे ये काम करता है. अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल इज डन विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन. अब जब थायरोक्सिन बढ़ रहा है
तो ज्यादा से ज्यादा सेल्स जो है वो ग्लूकोज लेगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल्स से लिया जाएगा, और सेल्स से ज्यादा ग्लूकोज लिया जाएगा तो ग्लूकोज की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगी। सो इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म के केस के अंदर पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहती है। थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रेट होता है, इसलिए ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, वहां से ब्लड में आता है, ब्लड के लेवल में शुगर बढ़ती है। थायरोक्सिन की वजह से ज्यादा फैट्स यूटिलाइज होते हैं, तो इसीलिए फैट्स डिपोर्ट कम हो जाते हैं, इसीलिए वेट लॉस होता है। ओके, एज वेल एज देयर इज एक्सोथैलेमस। दिस इज द diagram of exophthalmos. Protrusion of eyeball. Protrusion of eyeball is called as the exophthalmos. So hyperthyroidism का पेशेंट कैसे रहेगा? उसको थकावट रहेगी, बाल झड़ते हैं, वेट कम होता है, एक्सोथैलेमस रहेगा, आंखें ऐसी बाहर आई हुई होगी, भूख ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, हीट इंटॉलरेंस होगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। These are all the symptoms of hyperthyroidism. As I told you, protrusion of eyeball is called as exophthalmos. It is due to edematous swelling of retroorbital tissue. Edematous swelling of retroorbital tissue will lead to protrusion of eyeball, and this is called as exophthalmos. Particularly patient को देखकर आप अगर इस तरह के protrusion of eyeball है, तो you can say this may be the case of hyperthyroidism. ये एक patient hyperthyroidism का है, आप ऐसा बोल सकते हैं। This is the case of, again, the hyperthyroidism, protrusion of eyeball. Now, what is hypothyroidism? Decreased secretion of thyroid hormone is called as hypothyroidism. Decreased secretion of thyroid hormones is called as hypothyroidism. Hypothyroidism in adult leads to two things: myxedema and cretinism. There may be short note on myxedema and cretinism. So, like Graves' disease is hyperthyroidism, वैसे myxedema and cretinism is hypothyroidism. Decreased secretion of thyroid hormones is called as hypothyroidism. Hypothyroidism in adult lead to myxedema and cretinism. What is myxedema? Myxedema is characterized by generalized edematous appearance. पूरा appearance पेशेंट का रहेगा वो जैसे कि पूरा बॉडी स्वेल हो गई है, edematous appearance रहेगा. It is genetic disorder of iodine deficiency. It also caused by deficiency of TSH or TRH. It is due to autoimmune disease called as the Hashimoto's thyroiditis. Myxedema, again, it is characterized by generalized edematous appearance. Myxedema is most common in late middle-aged women. It starts with glandular inflammation called as thyroiditis. So this is the myxedema. In myxedema, you can see hairs are dry, porous, lateral eyebrows are thin, periorbital edema, puffy dull face with dry skin. See, you can see the case of, मतलब पेशेंट को देखकर ये पिक्चर आपके दिमाग में पूरा चाहिए कि ये जो है myxedema है, इडिमेटस अपीयरेंस है, आंखों के नीचे इडिमेटस अपीयरेंस है, बाल थोड़े झड़ रहे हैं, आईब्रोज के बाल कम हो जाते हैं, पेरी ऑर्बिटल इडिमा, आंखों के नीचे पफी स्वेलिंग है, पफी डल फेस विथ ड्राई स्किन. दिस इज हाइपोथायराइडिज्म. एक्सोथैलेमस जो मैंने आपको बताया था वो देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये हाइपरथायराइडिज्म है. और यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये हाइपोथायराइडिज्म है. मतलब ऐसा पेशेंट आपके सामने आता है तो आपको मोस्टली आपके दिमाग में हाइपोथायराइडिज्म आना चाहिए. दिस इज द myxedema. Myxedema may be asked as a short note. You should know this. So myxedema is hypothyroidism. Hypothyroidism is because of myxedema and cretinism. Myxedema is commonly seen in middle-aged women. Swelling of face होता है, bagging under the eyes, non-fitting edema, also cause atherosclerosis, which produce arteriosclerosis. What is arteriosclerosis? Hardening of the wall of the arteries.
hardening of the wall of the artery is called as the arteriosclerosis, which lead to atherosclerosis. Hardening of arteries क्यों होता है यहाँ? Because of accumulation of fat deposits. थायरोक्सिन कम सिक्रेट हो रहा है तो फैट जो यूटिलाइज नहीं होंगे, फैट अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो फैट ज्यादा जमा होंगे, ये फैट जो है वो आर्टरीज में जमा होंगे, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएंगे, वो वॉल ऑफ आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट्स बढ़ जाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट accumulation of fat deposits that lead to hardening of wall of arteries, that is called as arteriosclerosis, and that arteriosclerosis will lead to atherosclerosis. तो ये हाइपोथायराइडिज्म में हो रहा है। अदर फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या है? एनीमिया है, फटीग है, मेनोरेजिया, डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बॉडी वेट। यहाँ भी बॉडी वेट इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि थायरोक्सिन कम सीक्रेट हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म। तो थायरोक्सिन कम हो रहा है, फैट ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, फैट यूटिलाइज नहीं होगा तो वो जमा रहेगा, बॉडी में जमा रहेगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा। हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी वेट लॉस होता है, ओके, और यहाँ इंक्रीज होता है। कॉन्स्टिपेशन होगा, मेंटल स्लगिशनेस, डिप्रेस हेयर ग्रोथ, स्केलीनेस ऑफ स्किन, हस्की वॉइस, कोल्ड इंटॉलरेंस। टिपिकल वॉइस होता है हाइपोथायराइडिज्म में, हस्की वॉइस। That was about myxedema. What is cretinism in children? Cretinism is usually observed in children, like myxedema is observed in adult, especially in female. Cretinism in children, which is characterized by stunted growth. As I told you, thyroxine or thyroid hormones are essential to promote the growth also. और जब thyroxine अगर कम secrete होगा तो growth कम होगी, stunted growth होगा. It is due to lack of iodine in diet, and iodine is essential for formation of T3 and T4. After birth, baby develop croaking sound while crying, mentally retarded if not treated. These are all symptoms of cretinism. तो cretinism में क्या रहेगा? ब्लॉटेड बॉडी रहेगी, स्टंटेड ग्रोथ रहेगा, टंग इज बिग, हैंड्स डाउन विद ड्रिपिंग सलाइवा। यू कैन सी दिस टिपिकल अप्रोच इज क्रेटिनिज्म। ये अगर ऐसे दिखता है तो ये क्रेटिनिज्म है, दिस इज क्रेटिनिज्म। नाउ यू शुड नो goiter. We have mentioned to last part. Goiter means enlargement of thyroid gland. It occurs both in hypo as well as hyperthyroidism. हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट कम होता है, हाइपर का मतलब थायराइड हार्मोन जो ज्यादा सीक्रेट होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म इज बिकॉज ऑफ ग्रेव्स डिसीज, हाइपोथायराइडिज्म इज क्रेटिनिज्म एंड myxedema. You should know all these things. Goiter means enlargement of thyroid gland. It occurs both in hypo and hyperthyroidism. Goiter in hyperthyroidism is toxic goiter caused by thyroid tumor. In hypothyroidism, it is non-toxic goiter. What is endemic goiter? Endemic goiter is due to iodine deficiency. गले पे जब सूजन हो जाती है, पूरी गले पे इस तरह से सूजन हो जाती है। I have shown you one diagram also in hyperthyroidism, जहाँ गले पे सूजन होती है. This is called as the goiter. Let us find out that diagram. I will show you that picture. See, you can see this. ये goiter है, पिक्चर नंबर 1 में goiter, enlargement of thyroid gland. You are getting? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो goiter Yes, means sir. enlargement of thyroid gland. Endemic goiter is due to iodine deficiency. Idiopathic non-toxic goiter is due to unknown cause, may be due to thyroiditis. See, this is goiter. Such much huge goiter may be there. आप imagine नहीं कर सकते हो. इस तरह से you can see the inflammation or swelling of thyroid gland, and this can be operated easily. Okay, so that's all for today's lecture. Thank you very much. I hope you have understood the topic. Yes, sir. Thank you. Okay.